सो केमिकल बॉन्डिंग में जिस हेलो सर आपने पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग और नोट्स उसमें नहीं डाले। अच्छा नहीं है, कोई नहीं, मैं आज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी एक्चुअली, सर हाँ जी। और बाकी के भी उसमें से हट गए, बस 2-3 ही रह गए। ओके, अच्छा मतलब पहले पूरे थे। ये सर पहले थे सारे, अब 2-3 ही रह गए, बाकी सारे। ओके, करता हूँ, मतलब सर ने यूट्यूब लिंक भेजा था ना, उसमें उसमें से भी डिलीट हो गए। सर वैसे यूट्यूब लिंक तो है, पर जो नोट्स होते हैं ना वो नहीं। अच्छा नोट्स ना, ठीक है। नोट्स में आज ये दूसरा सर ने शेयर किया था ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दूसरा शेयर किया था आपके वो साथ। सर हमें कुछ नहीं पता। ओके, मैं आज सर से बात कर लेता हूँ, फिर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले यू नो हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, जैसे लेट अस से वी हैव CO2, so how do we write its Lewis structure? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो देखो, देयर आर थ्री कार्बन्स, थ्री एटम्स, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो 3 into 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सबका, तो 24। एंड दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर only those molecules which have complete octet of electron. अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 from carbon and 6 from each oxygen, so 16. So number of shared electron is, out of total electrons required to complete their octet minus valence electrons, so 24 minus 16, that is 8. So that means shared pair that is equal to 4. Now unshared electrons, so from the valence electrons we subtract shared electrons, so unshared electron required are also 8, means unshared pairs that is equal to 4. So in this way carbon is central atom, so there are either total 4 shared pairs and 4 unshared pair. So this is the resultant structure. So sorry, these are the, so tell me what is the formal charge on each oxygen? What is the formal charge on first oxygen? So formal charge on first oxygen, how do we? 0. No, formal charge on first oxygen, that is equal to, how do we calculate? Formula is valence electrons minus half of the shared electrons minus unshared electrons. That is the formula for formal charge.
So what is formal charge on first oxygen? So no, in oxygen valence electrons are 6 minus half of the, how many shared electrons are there? Because there is only one bond, so that means shared electrons are 2 minus unshared. So there are total 6 unshared electrons. So formal charge on first oxygen is -1. And what is the formal charge on carbon? So see, this carbon has total 8 shared electrons, no unshared. Valence electrons are 4 minus half into 8, because total 4 bonds are there. So 4 minus 4 means 0. So tell me, what is the formal charge on second oxygen? Yes. करोगे कैलकुलेट? What is formal charge on second oxygen? वैभवी? No? राशि? नहीं पता चल रहा है? Come again? +1. Yes, it is +1. Reason being, see, on the second oxygen, again valence electrons are 6 minus half into shared electrons are 6 and unshared electrons are 2. So it is 6 minus 3 minus 2, 6 minus 5, that is +1. So formal charge on second oxygen is +1. On the first oxygen it is -1, and on carbon it is 0. What about NO2 negative? It is same as CO2. Now total electrons are again 24. Valence electrons, now how do we calculate? 5 from nitrogen, 6 from each oxygen, +1. It is now 18. So shared electrons are 24 minus 18, that is 6. That means shared pairs 3. Unshared electrons, valence electron minus shared. So unshared pairs 6. So there are total 3 shared. So either it is 2, 1 or 1, 2. So if it is 2, there are 2 shared pairs, 1 lone pair on nitrogen, 6 on oxygen. So on the first oxygen, formal charge is
Valence electron 6 minus half of shared electrons 4 minus unshared electrons are also 4. So it comes out to be 0. Formal charge on nitrogen 5 minus half of minus 2. So it is again 0. And formal charge on second oxygen half into shared electrons 2 minus 6. So it is minus 1. And total sum of the formal charge is always equal to charge on the ion. And if it is neutral, total sum of the formal charge is 0. And if we have like structure CO2, so we saw that in the first oxygen formal charge is minus 1, 0, plus 1. Here it is 0, 0. Again it is plus 1, 0, minus 1. So most stable structure is with the least formal charge. So that is the middle one, CO2. So more formal charge का significance क्या है? Most stable structure is one with least formal charge. Okay. ये हो गया. Now Fezan's rule. So Fezan's rule tells us about, it gives us an idea about the covalent character of an ionic bond. So an ionic character is inversely proportional to covalent character. So small size of cation large size of anion higher charge and pseudo novel gas configuration. These favors covalent character. For example, if we have lithium chloride, sodium chloride, potassium, rubidium and cesium chloride, tell me which one is most covalent?
Yes, lithium chloride is most covalent, and then NaCl, KCl. So this is because of small size of cation. So this is the order of. सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब? हाँ, अभी बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ. नेक्स्ट इज we have lithium chloride, bromide and iodide. So if we compare them, lithium iodide is most covalent. Reason being, iodide being large in size, it can be easily polarized. Third is higher charge. So if we have NaCl, MgCl2, AlCl3, so higher charge, more covalent character. Last is pseudo noble gas configuration. So for example, if we have NaCl and CuCl, so CuCl is more covalent because in Cu1 plus it is like this. So it is not noble gas which has D10 configuration, means which is fully filled but not noble gas. That is called pseudo noble gas. Okay. सर जी बेटा. सॉरी LLBR, RBCl और MgCl रिपीट करोगे? Li, RBCl और MgCl2. oh अच्छा, एक्चुअली obviously MgCl2 जो है that has higher covalent character, बट ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब वो ऑर्डर जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है. मीन्स यू डोंट नो द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. मतलब हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ आइडिया है. जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, जितना साइज कैटायन का छोटा होता है उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है. और पोलराइजेबिलिटी मीन्स हाउ इजीली anion can be polarized, that is directly proportional to size of anion. तो पोलराइजिंग पावर इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना. वैसे ऑर्डर होगा MgCl2, LiBr और RbCl, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको. आपको क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसे जो आप प्रोडिक्ट कर सको, यू कैन प्रोडिक्ट इजीली, ऐसा ही क्वेश्चन होगा. जैसे FeCl2, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो कि लेटेस्ट आया हुआ है. ऐसा पूछा कि Kf और Ki में किसका जो है ज़्यादा होगा कोवलेंट करेक्टर. तो यू कैन इजीली प्रोडिक्ट, है ना. Ki, फिर LiF एंड Kf, तो किसका ज़्यादा होगा? हाँ, LiF. फिर एक क्वेश्चन था CuCl NaCl, अभी करवाया, तो ये होगा SnCl2 एंड SnCl4. बोलो. SnCl4 का ज़्यादा होगा. इस तरह से क्वेश्चन आएंगे. सर क्यों? क्योंकि बेटा हायर चार्ज, in SnCl2 it is +2, in SnCl4 Sn has +4 charge. Okay. Okay, now next is
जांस रूल हो गया। अभी वेस्पर थियरी में आपको वेस्पर थियरी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है दैट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इन टर्न ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. So first of all you have to calculate bond pairs and lone pairs. तो ये किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लेते हो आप. सिंपल से स्टार्ट करते हैं. जैसे लेट अस से SO2. तो बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर. SO2 में सर 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर. कितने बॉन्ड पेयर. सर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. हाँ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. तो कैसे करते हैं कि सल्फर इज सेंट्रल एटम. तो जितने एटम्स अटैच हैं उतने बॉन्ड पेयर. सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स. सो ईच ऑक्सीजन जो है दैट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए 4 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे और सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. तो 6 में से 4 यूज हो गए तो एक लोन पेयर. तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए. तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन टिन, लेड, ये हो गया. और यहाँ पे क्रिप्टॉन एंड जीनोन. तो ये आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं वो पहले पता होना चाहिए. और उसमें अगर एटम्स अटैच हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं आपको. सेंट्रल एटम के. और जो उससे सब्स्टिट्यूएंट एटम अटैच हैं तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं दैट इज मोनोवैलेंट. ऑक्सीजन जो है वो डाईवैलेंट. इतना सा याद है तो पूरा हो जाएगा. अब मुझे बताओ कि ICl2 negative, how many bond pairs and lone pairs are there. बॉन्ड पेयर कितने हैं. 3 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर. तो जितने आयोडीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन कितने हैं 2. तो 2 बॉन्ड पेयर. और आयोडीन 7 + 1 तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ 8 2 आर शेयर्ड. सो देयर आर 3 लोन पेयर्स. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. और अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप सम कर देते हो तो आपको पता है कि जो
टोटल सम है उसको हम स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर वो 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ज्योमेट्री इज लीनियर। 3 आता है तो sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 आता है तो sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। 5 आता है तो sp3d दैट इज ट्राइगोनल प्लेन पिरामिडल बाई पिरामिडल। जी सर हाँ बेटा बोलो। Sir, can you explain the lone pair with structure? Lewis dot structure, this one? No, sir. Lewis dot structure of Cl and Cl2 minus. Okay, actually you know Lewis dot structure जो है that is applicable for those molecules which obey the octet rule. Okay, got it? Yes, sir. So in this case, you know, iodine, it is attached to 2-chlorine and there are 3 lone pairs on the central atom. It is like this, but it is not obeying octet rule. So we cannot draw its Lewis dot structure. Okay. In short, it is a Lewis dot structure only. Okay, but because in Lewis dot structure, that is basically related to the compounds which obey octet rule. Only then we can calculate lone pair and bond pair according in that case. Here see, number of total lone pairs are 9. But in Vesper theory, we are concerned with the central atom only. So on the central atom, there are 2 bond pairs and 3 lone pairs. But if we see the whole molecule, how many lone pairs are there? So there are total 9 lone pairs. 2 bond pairs, 9 lone pairs. Okay. Same in case of Vesper theory, multiple bonds are treated as single super pair. Multiple bond, that is treated as single super pair, right? Multiple bond is treated as single super pair. So in Lewis dot structure, that is taken as 2 bond pairs, 2 shared pairs. Okay, तो shared pair means Lewis dot structure और ये जो Vesper theory है, they are entirely different because Vesper theory is related to shape only. Lewis dot structure cannot predict the shape of the molecule. Okay, so now if we have only 2 bond pairs, means it is AB2 type. So molecule is linear
and angle is 180 degree. There are 3 bond pairs, is AB3, it is trigonal planar, angle is 120 degree. If there are 2 bond pairs plus 1 lone pair, so one of the position is occupied by lone pair. So what is the shape of the molecule? Tell me. What is the shape of this molecule? Sir, bent here, V shape. Yes, it is bent, or an angle is less than 120. Similarly, if we have two bond pairs, tell me, 4 bond pairs and 1 lone pair, how do we arrange? See, this is like trigonal bipyramidal. There are 2 axial bonds, 3 equatorial bonds. So tell me where the lone pair lies. Lone pair is always at equatorial position, keep in mind, because when you draw the shape, this is if all the bond pairs are present. So you know, axial equatorial, there are 3 axial equatorial 90-degree bonds and 2 equatorial axial equatorial bonds for axial bonds, right? And for equatorial bonds, there are 2 90-degree. Rest are 120 and 180. So minimum angle is considered because where the repulsion is maximum. So if you see the repulsion that is minimum on equatorial, that's why lone pair always occupy equatorial position. So when we have one lone pair, it is like this. So it is seesaw. 3 bond pairs, 2 lone pairs. Sorry, 3 bond pairs and 2 lone pairs. So in this case, you know, it is T shape. Then 2 bond pairs, 3 lone pairs. Linear. Okay. Tell me, if we have
4 bond pairs and 2 lone pairs. What is the shape? Here all the angles are at 90, all the bonds are at 90 degree. It is square planar. Five bond pairs plus 1 lone pair. It is square pyramidal. And accordingly we can write the hybridization. Another formula for hybridization is half of number of valence electrons plus number of monovalent atoms plus charge on the anion minus charge on the cation. And if sum comes out to be 2, is sp3, sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3. So tell me, what is the hybridization of XCO3? What is the hybridization of xenon in XCO3? जी 4 है ना. तो hybridization is sp3. What about XCO4? बोलिए. सर XCO4 का X हाइब्रिडाइजेशन XP3 होगा. XCO4 का 8 plus 4. XP3D2. 8 plus 2. So first is sp3, another is sp3, next is sp3d2, and last is sp3d. So in this way you can write the hybridizations. Now, yes beta. It is either DSP2 or sp3d2 with 2 lone pairs. Like say we have SF4, right? Now what is the hybridization? H half 6 plus 4, it is 5 sp3d. Now if we talk about DSP2, that is not for p block elements. So chemical bonding is related to p block elements generally. So H4 means it can be square planar. बट केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादातर हमारे पास क्या है, और दूसरे मॉलिक्यूल है. जैसे XCF4 है तो उसको हम देख सकते हैं. देखो हाफ 8 plus 4 6 hybridization is sp3d2. Now say out of
total, what is this 6? This is total bond pair plus lone pair, and bond pairs are 4 only, so remaining 2 are lone pair. So it is what is the shape? Square planar. Got it? हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली, जैसे NiCN4 2 नेगेटिव. सर इसलिए वो ज्यादा कोऑर्डिनेशन परफॉर्म चैप्टर में हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस चैप्टर में हम जनरली हम किससे डील करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से. ओके, नेक्स्ट इज लेट अस से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ClO3 नेगेटिव. So tell me, what is the hybridization? Yes, because H is half of valence electron 7 on the central atom, monovalent atom 0, and charge on the anion 1. So it is 8 by 2 means 4. So sp3. So there are 3 bond pairs and total are 4, means 1 lone pair. Okay, now so in MOT, you know, molecular orbital electronic configuration, if we write up to nitrogen, it is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi to px, pi to py, sigma to pz, pi star to px, pi star to py, sigma star to pz. Now O2, F2 and Na2, Kk, sigma 2s, sigma star 2s, sigma to pz, pi type to px, pi to py, pi star to px, pi star to py, sigma star to pz. So ये ऑर्डर है. तो और अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना हो, से N2 है, N2 पॉजिटिव है, N2 नेगेटिव है, तो देर आर डिफरेंट वेज. जैसे लेट अस स्टार्ट विद टेन. So bond order is 1. For 12, bond order is 2. 14, bond order is 3. ये यार को N2, you know, all of us know, in N2 bond order is 3. So 3 से आगे जाओ या पीछे जाओ, bond order decreases. So if it is 15, so bond order is 2.5.
If it is 17, bond order is 1.5 and so on. So tell me, N2, what is the bond order? Total electrons are 14. So bond order is 3. N2 positive, 13. So 13, what is the bond order? 2.5. N2 negative is 15. So again 2.5. So it is like this. What about O2? O2 positive, O2 negative, O2 2 negative. बोलिए. It is 2 and O2 positive. 1.5 or 2.5? It is 2. So we decrease the number. It will increase. If we increase the number, so it is 1.02 negative, 1.5 and 1.0. So bond order is O2 positive greater than O2, O2 negative and O2 2 negative. So bond order is directly proportional to bond strength, inversely proportional to bond length. So O2, if we write its configuration, it is Kk sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px pi 2p by 2 and at the end pi star 2px pi star 2p y, it is 1 1. So that's why it is O2 is paramagnetic or diamagnetic? Yes, because it has unpaired electron, so O2 is paramagnetic and it has highest occupied molecular orbital is pi star to px and pi star to py, and lowest unoccupied molecular orbital is sigma star to pz. Or so if electron is removed from pi star, bond order is increased by half. If one electron is added to anti-bonding, then bond order is decreased by half.
in B2 and C2, tell me, the bond, is it sigma bond or pi bond between them? B2 bond order is 1, C2 bond order is 2. So keep in mind, in these two cases, the single bond between boron is a pi bond. In C2 even, bond between two carbon atom, both the bonds are pi bonds. So how do we predict? Otherwise, sigma pi bond cannot exist alone, but MOT tell us about this. See, in B2, it is, yes. हाँ, मैं बता रहा हूँ भाई, it is pi to px, pi to py 1 1. See, sigma star cancel, 2 minus 2 0. So there is only pi electrons which can contribute to the bond. Even in C2 is pi to px, pi to px to py2. So there are again 2 pi bonds. It is important. And in O2, it has bond order 2, but that is not 2 plus 1 plus 1. It is 1 plus half plus half. It is like this. There is one sigma bond, that is 2 electron bond, 2 electron, 2 center, 2 electron bond, and 2 bonds are 3 center, 2 center, 3 electron bonds, and 2 center, 3 electron bonds has bond order half, because in 3 electrons, 2 are bonding electrons and 1 is anti-bonding. Okay. Got it? So in O2, it is paramagnetic because of this structure. Otherwise, we can draw it like this. But in this structure tells us about that O2 should be diamagnetic. But actual structure is like this. Now, dipole moment. That is equal to product of charge into distance of separation. And the unit is coulomb meter, or CGS unit is ESU centimeter. So 1 and its unit is 1 dV, that is 10 raised by minus 18 ESU centimeter, or 3.3356 into 10 minus 30 coulomb meter. So, हाँ जी, B2 और C2 में C pi to px, pi to py 1 1. So these are the only electrons which can contribute to the bond order, which are in the pi bonding molecular orbital. Okay. Same is the case in the C2. In both the cases, जो electrons हैं
वो कहाँ है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, बेटा देखो ना, ये बॉन्ड ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड, देखो 2 - 2/2 0, here again 2 - 2/2 0, here 2 - 0/2, 2 - 0/2, 1 - 0/2, 1 - 0/2, 1/2, 1/2, so one order, 2/2, 2/2, 1, 1, 1 + 1, but both are pi bonds. Got it? पाई 2px के सामने पाई स्टार 2px नहीं है ना बच्चे, बॉन्डिंग है बट एंटी बॉन्डिंग जो है वो नहीं है, तो दैट इज नॉट कैंसल्ड आउट, सो पाई बॉन्ड इज इंटैक्ट, बट जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा स्टार जो है उस 2 - 2 0 हो जाता है, इसलिए B2 and C2, these are the only two molecules in the whole chemistry which has only pi bonds. Otherwise, pi bond is always accompanied with a sigma bond. That cannot exist alone. But B2, C2 में that does exist. Okay. Now non-polar molecules में dipole moment is 0. तो कौन से मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है? या तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, होमोडायटोमिक, all the homodiatomic molecules have 0 dipole moment. Second, molecules having only bond pairs, no lone pair, जिसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, एंड बॉन्ड पेयर्स आर ऑफ सेम टाइप, एक जैसे बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर ले हम तो H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 all are non-polar, but at the same time if we have CO2, so there are two CO bonds and there are only bond pairs, no lone pair, so it is non-polar. CCl4, there are 4 bond pairs, no lone pairs, but all the bond pairs are of same type, 0. But if we have CHCl3, now though there are only bond pairs, no lone pair, but bond pairs are of not same type, so dipole moment is not 0. So it is polar. So if we compare CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, so देखो polarity to 1 CCl
here it is cancelled by 1 Cl, cancelled by 2 Cl. So polarity is like this. CH3Cl is more polar than CH2Cl2, which in turn more polar than CHCl3. Now tell me, if we have, this is called orthodichloro, metadichloro, paradichloro. So what is the order of dipole moment? So it depends upon theta. Dipole moment is directly proportional to inversely proportional to theta, right? As theta increases, cos theta decreases, and therefore dipole moment decreases. So this value of dipole moment is 0. What about this? Is it 0 or not? If Cn are, it is again 0. What about this? See, actually in Cn, C and N are in straight line, so it is 0. But in this case, it may be like this, maybe like this, because of the presence of lone pairs on oxygen. That's why its dipole moment is not equal to 0. So this is a polar molecule. So this is cis. Oh, sorry. This is trans. What is the order of dipole moment? Cis is greater than trans because of this. Okay. This is most important, NH3 and NF3. Which one has higher dipole moment? It is NH3. Just draw the structure and you will get the idea. Because NH3, there are 3 NH bonds. In NF3, so polarity due to lone pair is in the same direction, and polarity due to NH is towards nitrogen. But in NF, they are partially cancelled out each other's effect. That's why dipole moment of NH3 is greater than that of NF3. And direction of polarity, it is towards more electronegative atom. Okay. Any topic जो टच नहीं किया हमने?
हाँ ये क्वेश्चन है ना बुक में एक, वी हैव BF3 प्लस NH3 और उससे तो बताओ what is the hybridization of boron and nitrogen in the complex? Hmm? Sir, sp2 and sp3. In BF3, boron is sp3, sp2. In NH3, it is sp3 because there are three bond pairs. There are three bond pair, one lone pair. And what about BF in this case? Both are sp3 because there is a coordinate bond formation. So both are sp3. Sir, so coordinate bond को sigma bond से करेंगे. Yes, coordinate bond is same as sigma bond. और मैं let's do some questions. Yes बेटा, बोलिए बेटा. sp sp2 sp3. हाँ जी क्या बोल रहे हो? हाँ, here you can draw it anywhere because all are equivalent. Bonds are equivalent. In only the case of trigonal bipyramidal is different. Okay. In rest cases, you can draw them anywhere. Say if we have this molecule, this compound, if we compare with another molecules like let me see 20th. One compound, second compound, okay.
So tell me which one has highest dipole moment? Which shows highest dipole moment? Option A. Tell me the reason. What? Come again? Because of resin radical. Resonance. It is so why it dance actually? Sir, actually, if we break from, if we break the bond from it, then the reaction for So something special happened because of that? Why it breaks? So actually reason is, if we break this bond, it can be easily shifted towards this, because if we shift it like this, both ring becomes aromatic. It is because of the aromaticity. Both rings becomes aromatic, and that's why there is a greater positive and negative ends, they acquire an aromaticity, and that's why it has highest dipole moment, because of the aromaticity. This 4n plus 2 rule, pi electron rule, is followed by both. In first case there are 2 pi electrons, in the other case there are 6 pi electrons. That's why. Ortho aniline, nitrobenzene, para-nitroaniline, and meta-nitroaniline. Tell me, which one has maximum dipole moment? Sir, second. मुझे लगा ही आप ये बोलोगे, but because NO2 and NH2 both are, third is right answer, because because of resonance, there is resonance, and due to resonance there is, first of all, there is linearity, and there is a greater charge separation, and due to this resonance, it has highest dipole moment. This one has highest dipole moment. If both are NO2, then it should be B. But because one is electron withdrawing group,
other is electron releasing group. That's why both are acting in the same direction. That's why C has highest dipole moment. Okay. This question students asked many times, but in this question, question was in previous year, this was the question that how many lone pairs are there in the I3 negative. It is not asked how many lone pairs are there on central iodine. On the central iodine, there are three lone pairs. There are 2 bond pairs, but on each iodine there are 3 lone pairs. That's why it has total number of lone pairs as 9. Okay. नेगेटिव साइन जो हाँ जी, सर वो क्या मतलब रिप्रेजेंट beta I, it can be written as I2 negative. Negative means on the whole I3 there is one negative charge. It can be written as I2 I negative. So one I negative is attached to I2. सर मतलब हर एक आयोडीन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं, मतलब सेंट्रल एटम पे हुआ ना बच्चे। सेंट्रल आयोडीन ने कितने एटम, कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। अदरवाइज कितने बॉन्ड बना सकता है आयोडीन? हाँ सर एक ही बना सकता है, इसलिए उस पे माइनस। हाँ तो हाँ ठीक है। ओके, तो ये हो गया। BF3 जो होता है उसमें जो BF बॉन्ड्स हैं, नॉर्मल BF बॉन्ड से ये BF बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ p pi बैक बॉन्डिंग। बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है, और देयरफॉर they form a double bond between B and F. Okay. तो अगर मैं BF3, BCl3, BBr3 और BI3 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करूं तो बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? हाँ जी, वेरी गुड, BI3। रीजन बीइंग कि पहले में p पाई बैक बॉन्डिंग 2p में, दैट इज मैक्सिमम, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है बहुत कम हो जाएगी। अदरवाइज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कम होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। बट एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है क्योंकि p पाई बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन BF3। दिस इज द रीजन। ओके, अब मुझे बताओ आप, NCH3 थ्राइस में
What is the hybridization of nitrogen? sp3, very good. And what is the hybridization of nitrogen? NiSiH3 thrice. Very good. How do you know? Could you explain? Huh? Actually, there is p pi d pi back bonding. And because of this p pi d pi back bonding, nitrogen is lone pair is less available on nitrogen, and therefore basic strength of NCH3 thrice is more, because lone pair is available on nitrogen in trimethyl amine, but it is not available on tricylyl amine. So basic strength order is like this. Hybridization is like, what is the hybridization of phosphorus in solid PCl5? What is the hybridization of phosphorus in solid PCl5? It is for a gaseous PCl5, because solid PCl5 exists as ionic solid. Solid PCl5 is an ionic solid, and in this case phosphorus has sp3 and sp3d2 hybridization. ओके तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। कर लोगे? हाँ जी, दोनों बेटा ऐसे लिखोगे कि इट हैज phosphorus has two hybridizations, sp3 and sp3d2. ठीक है, ओके। ओके देन इतना करते हैं आज। ओके, किसी को डाउट है कोई तो पूछ लो प्लीज। ओके ठीक है, यू कैन लीव नाउ। जी बेटा, बोलिए बेटा। परसेंटेज एस करेक्टर सिंपली अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो जैसे एस पी है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना हो जाएगा? टोटल है 2 और एस है 1, तो इट इज 50%। sp2 है तो s है 1 और टोटल है 3, तो 33.3%। sp3 है तो s है 1 टोटल है 4, तो 25%। ओके, बस ऐसे ही करना, ठीक है। हाँ बेटा, परसेंटेज इन
ठीक है परसेंटेज पी करेक्टर इन PCl5. yes sir. So it is sp3d, so it is 3 by 5 into 100. How many p orbitals are there? 3, and total are 5. So 3 by 5, it is 60%. Okay. Yes. Okay then, bye bye. But Bye. Thank you, sir. Welcome बेटा. yes, ठीक है sir. हाँ जी. ये रोटी पा. हेलो. हाँ शनि बोल बोल. गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा. सर. मैंने नेहा मैम को PDF भेज दिया है. अच्छा बढ़िया किया बढ़िया किया. हाँ, नेहा मैम का मैसेज आया था, मैंने PDF भेज दिया है. अच्छा चलो अच्छा किया. सर मैं क्या बोलता हूँ, कल एग्जाम में एक ही चैप्टर आएगा ना आपको? एक ही चैप्टर नहीं, जो भी आपको पूरा चैप्टर आएगा. पूरा हाँ, चैप्टर नहीं, अरे पूरा चैप्टर नहीं मतलब पूरा जितना होता है मतलब. सिलेबस में कुल 3 चैप्टर है. हाँ 3 में से आएगा? 3 में से आएगा पूरा. अच्छा 3 अच्छा. नहीं 4 चैप्टर है शायद. हाँ 4 चैप्टर. हाँ तो चारों में से आएगा है ना. कोई बात नहीं. 40 मार्क्स का हो ना चैप्टर? मतलब 10 10 10 30 मार्क्स का होगा. जैसे पहले 30 marks. पहले यूनिट से 2 क्वेश्चन, फोर्थ से 1, दूसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन, फोर्थ से 1, तीसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन, फोर्थ से 1, उसमें से 2 करने हैं. मतलब पहले 3 भी किए होंगे आपने तो चलेगा. हाँ हाँ. ठीक है ओके. और 10 मार्क्स का MCQ आएगा ना? हाँ 10 मार्क्स का MC. ठीक है सर. ओके. ओके. पाए रोटी मम्मी का है वो यार. रोटी दो मुझे. रोटी आहू.